Hello and welcome. This is CJ Plus, a show that's got the pulse of the people. It's the show that gets the cameras out of the news studios into where you are. Your issues, your stories. That's what makes CJ Plus. There's a lot packed in on the show today, so let's get started. A citizen exposes the pathetic state of railway stations not too far from the national capital. मैं आज आपको फरीदाबाद और बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन जो कि नेशनल हाईवे 2 से काफ़ी कम दूरी पर हैं, उनकी पैथेटिक कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूँ। And a CJ Plus impact report of the battle for justice of a differently abled doctor. तो अभी मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री ने फ़ोन पर इंटीमेट किया है कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुझे फिटनेस दे दिया है और अभी 1-2 दिन में हेल्थ मिनिस्ट्री मुझे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रिलीज करेंगे। Our first citizen journalist report on the show is going to expose the pathetic state of railway stations across the country. This particular report focuses on the ground realities in the stations of Faridabad and Ballabgarh, not very far from the national capital. That is where we are. Manoj Badwa is our citizen journalist and he's been able to record as videos and pictures just how much the stations are lacking. The good thing though is that the railway authorities have taken responsibility when the citizen journalist team approached them. They've promised us action and the CJ team will make sure we go back and check that the promise is met. Take a look at the citizen journalist report. मैं सिटीजन जर्नलिस्ट मनोज वाधवा, मैं सीजे शो से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने करीब 2 साल पहले रोड पे बने हुए गड्ढे की वजह से अपने 3 साल के बच्चे पवित्र को खोया। मैं तब से रोड्स को सेफर बनाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मैं सीजे शो पर दोबारा से आया हूँ। मैं आज आपको फरीदाबाद और बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन जो कि नेशनल हाईवे 2 से काफ़ी कम दूरी पर हैं, उनकी पैथेटिक कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूँ। अपनी इस लड़ाई के दौरान मैंने ये रियलाइज़ किया, अगर आप सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले करीब 8 सालों से फरीदाबाद में रह रहा हूँ और लगभग उतने ही समय से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन का यूज़ कर रहा हूँ। मेरे जैसे और भी कई यात्री हैं जो इन स्टेशन का रेगुलरली यूज़ करते हैं और मैंने पिछले कई समय से यहाँ पर कुछ खास बदलाव नहीं देखे हैं। So today, with the CJ team, I'm spending a day at these stations to show you the problems that we face on a daily basis. अभी हम बल्लभगढ़ स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे रोड बिल्कुल टूटी हुई है और बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी भरने से हालात और भी बिगड़ जाते हैं और यहाँ पर आने जाने वाले पैसेंजर्स को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। As the evening approaches, the situation gets worse. आप देख सकते हैं रात हो चुकी है और अंधेरा हो चुका है। यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है। अंदर के हालात भी कुछ डिफरेंट नहीं हैं। सिर्फ 20% हिस्से पे ही शेडिंग की गई है जहाँ पे कि लाइट्स जल रही हैं। बाकी के हिस्से पर ना ही कोई शेडिंग है और ना ही वहाँ पर कोई लाइट्स लगाई जा सकती हैं और पूरे ही रेलवे स्टेशन पर कोई भी कोच इंडिकेटर इंस्टॉल नहीं किया गया है। जहाँ पे शेडिंग की गई है उतने ही एरिया में जब ट्रेन आती है वो दिखाई देती है और बाकी के एरिया में ट्रेन का कोई भी डब्बा ढूंढना पैसेंजर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। दिक्कत ये होती है कि बारिश के टाइम पे इतना पानी यहाँ पर भर गया कि उस वजह से यहाँ पर पत्थर और डाल दिए। आने जाने वाले पैसेंजरों को इतनी दिक्कत हो रही थी, अब ऊपर से लाइट और बंद हो गई। लाइटें वगैरह की व्यवस्था सही नहीं है, बिल्कुल ही सही नहीं है। कोच इंडिकेटर है अंदर? कोच इंडिकेटर भी नहीं है। कोई भी एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन आती है तो कोई भी उसमें इंडिकेटर वगैरह नहीं है। We then move from one station to another. यहाँ के हालात बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से कंपैरेटिवली बेटर हैं। यहाँ पर रोड भी बनी हुई है और स्ट्रीट लाइट भी काम करती है, लेकिन प्लेटफॉर्म के हालात 10 के 10 बने हुए हैं क्योंकि जो शेडिंग की गई है वो करीब 50% एरिया पे की गई है। बाकी एरिया पे शेडिंग ना होने की वजह से कोई भी लाइट्स इंस्टॉल नहीं की जा सकती हैं और पूरे स्टेशन पर कोई भी कोच इंडिकेटर इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को अपना डब्बा ढूंढने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रात के टाइम टैक्सी वगैरह भी नहीं होता है, लाइटिंग भी नहीं है और जो प्लेटफॉर्म भी आप ऊपर की तरफ से देखेंगे यहाँ पर ही सिर्फ लाइटिंग है, लेकिन आगे जो प्लेटफॉर्म है मेन प्लेटफॉर्म पे लाइटिंग नहीं है। मुश्किल से 40% है बस, और कुछ भी नहीं। उसके अलावा फिर भीगना ही आपको खड़े रहेगा। और बाकी लाइट वगैरह का क्या इंतजाम है? कूली वगैरह में क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, कूली है ही नहीं है स्टेशन के ऊपर। सिक्योरिटी तो बिल्कुल यहाँ पे जीरो। तो मिलिट्री वाले होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, बिल्कुल नहीं होते यहाँ पे। और जो क्रॉसिंग होती है, ट्रैक क्रॉसिंग, वो आसानी से कोई भी कर सकता है और आने जाने में कोई भी बंदा यहाँ बाहर से आ सकता है, कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। Not only this, with the recent incident of the murder of an Infosys employee at Chennai's Nungambakam railway station making headlines,
The lack of security and safety measures at both these stations has become a major cause of worry for us. यहाँ पे जितने भी यात्री अंदर जा रहे हैं उनका कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं किया जा रहा है, उनका लगेज भी स्कैन नहीं किया जा रहा है, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हो सकता है। In order to highlight these issues, I took pictures and made videos and tweeted them to the railway authorities. In my tweets, I also tagged the CJ team, who also retweeted me. Despite this, I didn't get any response. मगर मैंने हार नहीं मानी और मैं रेलवे अथॉरिटीज़ को लगातार ट्वीट्स भेजता रहा। कुछ दिनों बाद मुझे रेलवे अथॉरिटी ने कांटेक्ट किया और मुझे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आश्वासन दिया। The CJ team took this matter to the railway authorities to know what they had to say. There has been a delay in receipt of material. That is why you see the level of illumination was low. There is a work which is already sanctioned even over a period of time during this year itself to convert all the conventional lights into LED lights. So even the illumination will become even better. But next week, if you see, illumination will not be an issue at these two stations because the work is already going on. We are getting about 12.5 crores from Nirbhaya Fund by the Government of India for installation of CCTVs. So both these stations would get covered by 30 CCTVs as soon as you see we receive the funds and we award the work. As far as Faridabad is concerned, we already have a sanctioned work of provision of coach guidance boards, and it is going to get installed during this year itself. Ballabgarh, after coverage of other important stations in Delhi division, this station will also get its turn for having a coach guidance boards. मैं इन प्रॉब्लम्स को रेलवे अथॉरिटी को लगातार हाईलाइट करता रहूँगा जब तक कि इनका कोई प्रॉपर समाधान नहीं दिया जाता है। मैं मनोज वाधवा, सिटीजन जर्नलिस्ट, CNN News 18 के लिए। If you too have your stories, your experiences at the railway stations across the country, remember to tweet them to us using the hashtag StationVoz. Remember, it's your conversations, your contributions that take the story forward here on CJ Plus. And this is exactly what our next citizen journalist, Dr. Satyendra Singh, is doing. Last week, we started the conversation about accessibility. Our citizen journalist was Nipun Malhotra. And this week, Satyendra Singh is taking that story forward. Take a look at his report. Hello, I am Dr. Satyendra Singh. I have been a CJ before. I am a person with locomotor impairment who is made disabled by society's physical barriers. Last week I saw the story of Nipun Malhotra on inaccessible ATMs. I am also fighting the same battle. Look at this steep slope in the name of ramp at IDBI Bank's Vasundhara branch. Neither disabled nor non-disabled can climb this Mount Everest. There is another wonder designed by ICICI Bank at Suryanagar branch. Have you ever seen a step at the beginning of a ramp? This is the office of Divisional Railway Manager, New Delhi. And this is specifically for people with disabilities from where they can get their railway concession certificate. But can a wheelchair user ever climb this steep and horrible ramp? To CJ, I want to hold them accountable to end this discrimination towards people with disabilities. Accessibility is not our divine need, it is our basic human right. Dr. Satyendra Singh, citizen journalist, News 18. But it isn't just accessibility. In fact, people with special needs have a battle to fight every single day. A few weeks ago, we got you the story of Dr. Desh Raj. He is a practicing doctor with the Delhi government. He qualified, made rank for a placement with the central government, but was declared unfit. Today, we are happy to report that that is going to change. There has been an impact of his citizen journalist report. Take a look. This is the story of how I became a citizen journalist to fight for my right and how that led to an impact. It all started when I applied for the Combined Medical Services Examination 2015 and cleared the exam. मेरा नाम डॉक्टर देश राज है। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट बना हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए किस तरह से यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी
मुझे सरकार अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है क्योंकि मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ। I am differently abled. Both my legs are 85% affected due to polio, but that doesn't come in the way of performing my duties as a medical officer at a state government-run dispensary in Pandavnagar, Delhi. For the last 6 years, I've been treating patients here, my disability never coming in the way of my work until now. ये मेरे पास कंबाइंड मेडिकल सर्विस 2015 का रिजल्ट है, जिसके अंदर इन्होंने मेरा नाम दिया है 1174वें नंबर पे। अभी मेरे पास लिस्ट है जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, जिसके अंदर इन्होंने मुझे सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज कैडर अलॉट किया है। I qualified, made rank, fulfilled requirement, but most importantly, I've proven myself capable in all regard as a medical officer. Yet, I'm being denied my right. मैं आशा मॉड्यूल ट्रेनर भी हूँ, मैं इम्यूनाइजेशन भी करता हूँ, मैं सारा काम जब दिल्ली सरकार में करता हूँ विकलांग होने के बावजूद, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में क्यों नहीं कर सकता? CJ Plus team has been with Dr. Deshraj's fight for justice. We have taken his story to the authorities and to the influencers. Because see, if someone has both legs disabled but he can still sit and do the job which a doctor needs to do, and he can examine his patients, which Dr. Raj I believe has been doing for so many years, then how does it matter what disability he has? One step at a time, Deshraj has come closer to his dream. मेरी रिपोर्ट 3 जुलाई को ऑन एयर हुई थी CJ प्लस में, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसका इम्पैक्ट भी हुआ है, और अब हेल्थ मिनिस्ट्री मेरे केस को दोबारा री-एग्जामिन करा रही है। Finally, on the 10th of August, Deshraj was asked to appear for a medical re-examination at RML Hospital, where he proved his ability. The confirmation of which was given to Team CJ Plus by Ministry of Minority Affairs as well. मैडम, हमारी खबर का असर हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया था RML हॉस्पिटल के अंदर, जिन्होंने मुझे मेडिकल एग्जामिनेशन किया। तो अभी मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री ने फ़ोन पर इंटीमेट किया है कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुझे फिटनेस दे दिया है, और अभी 1-2 दिन में हेल्थ मिनिस्ट्री मुझे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रिलीज करेंगे। The triumphant Dr. Deshraj confirmed to us through this video that he'll soon be getting his posting in the CHS cadre. Deshraj is yet another example of a citizen fighting the unjust system and winning it too. With camera person PK Das and Chintan Puri in New Delhi, I am Runchun Sharma. In fact, this is what the team attempts for every report, a solid impact. With that, we're slipping into a very short break, but on the other side, your videos and pictures, and also a ray of hope in a special report that the team has been tracking for the last 2 years. Do come back for that. Welcome back. You're watching CJ Plus. This week we are coming to you from the New Delhi railway station that sees a footfall of about 5 lakh people every single day. Sights and sounds of the city that you can take a picture, make a video and send it to us for our special segment, Videos and Pictures. This week, many of you picked up your cameras, clicked pictures and videos as the whole of NCR region came to a standstill thanks to the bout of rains. We're compiling all of these videos and pictures. Take a look. A young CJ from Gurugram, Garvit Bhirani, sends us these pictures of water gushing inside his house during heavy rains. He says the drainage system in his locality is very bad. Our citizen journalist Navdeep Singh has sent us a series of photographs showing how the pounding rain brought the Millennium City to its knees. NH8 completely waterlogged, as was the Hero Honda Chowk. This picture of the roads in Sector 12 Gurugram show how commuters were stuck in waist-high water. The situation was no better in other localities as well. Roads caved in and this crater was clicked by CJ Navdeep at the Agarwal Chowk.
Bus stands and hospitals saw waterlogging as well, commuters and the traffic police all facing the brunt of poor urban planning. A different aspect of the waterlogging problem is being shown in this video sent to us by CJ SK Maheshwari from Sahibabad. He says that while the civic agencies blame each other, the citizens can do their bit to make sure rainwater percolates into the soil. और ये देखिए खड़ंजा लगा हुआ, खड़ंजे के अंदर हमने इसके जॉइंट्स के लिए रखे हुए हैं कि जब पानी आता है तो इसमें अगर खड़ा भी होता थोड़ी देर के लिए तो अपने आप वो जमीन के अंदर रिस जाता है. The residents in his locality have made sure that the slope towards the drains is not disturbed and concrete does not block the water from flowing into the soil. कल भी जब बहुत बड़ी बारिश हुई और पूरे दिल्ली और एनसीआर का हालत खराब हो गई थी, सब जगह पानी पानी त्राहिमाम मचा हुआ था, तब भी हमारे यहाँ बिल्कुल पानी नहीं था. इसका एक ही कारण है कि हमने सड़क के किनारे के जो ढाल हैं वो नाली की तरफ नॉर्मल बनाए हुए हैं. CJ Sunil Taneja was stuck in traffic after a bout of rain and sent us this video. But the pothole menace is not just an NCR issue. This video of huge potholes on the Mumbai-Pune highway was sent to us by CJ Gaurav Gupta. He says almost the entire stretch of this national highway has these deadly potholes. Next on the show is the story of veteran dancer Tara Balagopal, celebrated once, forgotten today. She has been living a life of penury. We've been following this story for the last 2 years, and finally there seems to be a ray of hope in terms of recognition and support that's coming 88-year-old Tara Balagopal's way. Once the pride of India, a dancer, an artist, today Tara Balagopal has been forgotten. We belong to a family which brought out Bharatnatyam from the GB Road type of prostitutes to stage. It's a crumbling house in Delhi's Rajouri Garden where 88-year-old Tara lives. These damp walls hold the testimony to her life as a dancer. Cluttered around her are memorabilia of the years gone by. Today, that pride is covered in cobwebs. The memories have blurred. After years of service as a professor of English at the Delhi University, Tara and her husband had approached the High Court for pension. English was my main subject, but I used to teach drama, ethics. Yes, they have not recognized my services. 4 years ago, she lost her husband and also the legal battle. The case exhausted all her savings, leaving her with no money, even to buy milk for a cup of tea. ये हमें खाना दे देती है, कोई और ले देता है. But CJ Plus pledged that this veteran artist will not be forgotten. Her service of art and culture will not go into oblivion. Following a relentless campaign to help Tara Balagopal, for the past 2 years, many citizens have inspired to help. Taraji, we have people who want to speak to you and say something. You are welcome. All right, so we have Narsimhan who's joining us from Bangalore. On CNN News 18, calls after calls to support Tara only proved that the country will not let her down. CJ team created a Facebook page for her, and many volunteers have come out to help Tara. But what is needed is recognition and consistent assistance. A ray of hope in that direction is External Affairs Minister Sushma Swaraj tweeting a promise to help. The hope is that this time around, Tara Balagopal would get what she rightfully deserves.
that's all that we could pack in on this special edition of CJ Plus. But remember, your camera and you, the citizens, are the real stars of the show. So tell us how we can make the show better. Tweet to us. You can also join us on Facebook. Take down our WhatsApp number so you can quickly and easily send us your videos and pictures. From the entire team then, goodbye and we'll see you next week.